I will do this question number 4, page 51. Question number 4, page 51. Yes, Ahmedabad, you there in the class? Yes, sir. कौन सचिन है क्या ललित है? ललित नहीं आज? Okay, let's see what they say. Chennai Limited. ये सारी varieties हैं, मतलब like we are solving like since questions maybe less or whatever. So all the varieties we are solving. In fact, whatever questions we have solved, all were varieties, some way or the other. अब देखो इसमें क्या variety है? Chennai Limited and Kolkata Limited have agreed that Chennai Limited will take over the business of Kolkata Limited. तो Chennai Limited कौन होगी? Purchasing company. तो लिखते हैं वहां पर P company and Kolkata Limited is of course selling company. It is agreed that 10 lakh shareholders of Kolkata Limited will receive shares. उसको बंद कर दे, टीवी को बंद कर. Will receive shares of Chennai Limited. The swap ratio is determined on the basis of 26-week average market prices of shares of both the companies. Underline that swap ratio is determined. It's basically what, like, swap ratio is what? Come on, like, attention here. Like, how many shares the purchasing company will give to the selling company? Swapping. Well, I am taking over your business. So, in lieu of that, what I will give you? So, I mean, but instead of giving you directly, उसने ऐसे swap ratio word बोल दिया. तो ये कोई खास चीज नहीं है. It is nothing but whatever I am giving you in lieu of whatever I am taking from you. Like we are swapping, the business. So I am giving you what? So it is based upon what? On the average market price of the shares of the companies. Or average prices have been worked out at 50 rupees and 25 rupees. So मतलब in short swap ratio कितना हो गया? 2:1. तो वहां पर उसको कैंसिल करके लिख दो. 2:, कैंसिल मतलब सिंप्लीफाई करके 50 and 25 मतलब swap ratio is what? 2:1 for the shares of Chennai Limited and that of Calcutta Limited. In addition to one above, जो ऊपर है वो तो है ही, shareholders of Kolkata Limited will be paid cash based upon the projected synergy. Underline that projected synergy. Be careful, हाँ, projected synergy के बहुत टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं. एफएम के अंदर भी आते हैं क्वेश्चंस. मैं आपको बताऊंगा आज. विल गिव यू सम रेफरेंस ऑफ दैट. That will arise on the absorption of business of Kolkata Limited by Chennai Limited. 50% of the projected benefits will be paid to the shareholders of Kolkata. Can anyone of you all say me, friends, what is positive synergy actually? What do you mean by that? See, question मैं आपको hint देता हूं. देखो, इसमें क्या है? Chennai Limited is taking over the business of Kolkata Limited. So, the question comes, why will Chennai Limited take over Kolkata Limited? Why will they take over? Come again? Because they think that it will be beneficial. So, in short, positive synergy is basically what? I mean, Chennai was doing some business themselves. And they were doing pretty good. As well as Kolkata was also doing their business. लेकिन now Chennai को क्या लगता है कि अगर वो कोलकाता को टेक ओवर करेगा ना, तो they will get some extra benefit. तो in this question what is happening? अगर आप नीचे देखो, वो जो टेबल दिया है, following projections have been agreed by the management for both the companies, and they are giving you already that positive synergy का figures. एक ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. In fact, it has come latest in exam. Shyam Limited and Kiddies Limited. It's a very popular question. Like, when you saw your past papers, you'll refer to that word also. Shyam Limited and Kiddies Limited. वो कभी FM में आ जाता है, कभी अकाउंट्स में आ जाता है. उसमें मालूम क्या आता है? सेम ऐसा ही क्वेश्चन था. But positive synergy we had to find out. So how will we find out? We will take the combined business का expected cash flows. Combined business मतलब जैसे चेन्नई और कैलकाटा का मिल के whatever will be the expected cash flows. वो फिगर वो आपको क्वेश्चन में देगा. वहां से हम माइनस करेंगे the expected cash flows only of Chennai Limited. मतलब हम दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या होगा? माइनस मेरा अकेले का तो है ही इंडिविजुअलिटी. तो कंबाइंड बिजनेस माइनस इंडिविजुअल बिजनेस का जो आंसर बचता है, द डिफरेंस,
that is nothing but positive synergy. So this question is still simple by not giving directly by giving the figure of positive synergy directly. अगर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं आपको देता तो आपको निकालना पड़ता. तो आप कैसे निकालते हैं उसको? ऐसे शेड्यूल मैं आपको एक नोट लिखा दूंगा अभी, बिकॉज इट्स कम इन एग्जाम एंड 2-3 टाइम इट हैज कम इन एग्जाम. So how will you get the positive synergy out over there? It is nothing but you will take the combined business का cash flows minus from their individual business का cash flows. तो जो आपका बचेगा that will be positive synergy. यहाँ पर लेकिन he has given you that figure. तो just following projections have been agreed upon, उसको अंडरलाइन करके बाजू में लिख दो figures of positive synergies. Then what? फिर वो बोलता है द बेनिफिट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो एट द रेट ऑफ 2% फ्रॉम 2007 ऑनवर्ड. देखो उसने अब तक अपने को कौन से साल का दिया है? वो 2006 तक का दिया. तो 2007 ऑनवर्ड्स के लिए ही हैज सेड यू दैट देयर इज अ ग्रोथ रेट ऑफ हाउ मच परसेंट? 2%. एंड फर्दर एग्रीड दैट अ डिस्काउंट रेट ऑफ 20% इज टू बी यूज्ड टू कैलकुलेट द कैश दैट द होल्डर ऑफ ईच ईयर ऑफ कोलकाता लिमिटेड विल रिसीव. मतलब जो आपको प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, that will be at what rate of discounting? It is at 20%. Underline that 20%. Question पूछता है calculate the cash that the holder of each share of Calcutta Limited will receive and also calculate the total purchase consideration. अब देखो नीचे उसने क्या बदमाशी की है. He has given you discounting factor, discounting rate 20%, उसके नीचे discounting rate 18%, उसके नीचे discounting rate 16%. उसने खुला तो मुझे ऊपर बोला था ना. क्या बोला था उसने मुझे ऊपर? दैट यू हैव टू टेक हाउ मच परसेंट? यू हैव टू टेक 20%. तो इफ यू हैव टू टेक 20% तो फिर क्या करेंगे? 18% और 16% को विल बी टोटली इग्नोर. तो एक काम करो, जो सेकंड और थर्ड है नीचे डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 18% एंड 16%, एक कॉमन ब्रैकेट करके वहां पर लिख दो इग्नोर, बिकॉज इट इज गिवन टू टेक हाउ मच परसेंट? 20%. Pretty good question, pretty good question. Like variety, इतना टफ कुछ नहीं है लेकिन वैरायटी है. इट्स अ टिपिकल क्वेश्चन. लेट्स सी हाउ आई गो अबाउट. लेट्स स्टार्ट. ये वैसा ट्रेडिशनल टाइप नहीं है कि कैलकुलेशन ऑफ नट्टो, कैलकुलेशन ऑफ नेट पेमेंट. इवेंचुअली वी विल ब्रिंग इट टू दैट लेवल, बट बिकॉज द क्वेश्चन इज इन डिफरेंट वे, तो अपना सोल्यूशन भी उस तरीके से ही चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट ए. Part A, I am giving the heading calculation of the positive synergy. Actually, इस क्वेश्चन में it is given, but still like वो मैं रेफरेंस दे रहा था ना आपको शाम और किडीज के क्वेश्चन का, तो वो कैसे होता है वो आपको बता देता हूं. सो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? पॉजिटिव साइनर्जी. एंड हाउ आई विल गो अबाउट द सी नाउ. It will be see somewhat like this. कितने साल उसने आपको दिए? 2002 से लेकर 2006 तक. गिव द हेडिंग्स 2002, 3, 4, 5 and 6. 2002, 3, 4, 5 and 6. How will I get this? See, it's like this. Combined business of Chennai and Kolkata. Combined business of Chennai and Kolkata. I believe all the figures are in lakhs, are they? Yeah. यहां पर ऐसे ब्रैकेट में कॉमन लिख देंगे. The figures are in lakhs. Then I am minus from here. Minus from here what? Business of Chennai. Chennai Limited, of course. Akansha, you don't require call at this stage because here figures are not there. This I'm just giving you an additional thing, like in case if I have to find out, then that's the way to find out. यहाँ पर हमें find out करने की जरूरत नहीं है. It's already found out. I repeat once again: combined business of Chennai plus Kolkata. Minus come fast. Minus from their business of only Chennai Limited. तो फिर ये जो करने के बाद जो आंसर आता है ना, that is nothing but what?
the positive energy. What is